Dressed in black, distinctly visible tattoos on her body and wrinkles on her face, an elderly lady is busy doing embroidery. The distinctive embroidery, detailed threadwork and profusion of colors, all perfectly stitched together, are hallmarks of the Rabari tribe to which she belongs. The Rabaris are an indigenous tribal caste of nomadic cattle and camel herders and shepherds, mostly living in northwest India, particularly what is now Gujarat. Hasuben is an artisan just like Our Lady in Black. She's also an expert in the very unique style of Rabari embroidery. Famous the world over, Rabari embroidery symbolizes the mythology, rituals, culture and life of the Rabaris. આપણી આ પરંપરાની છે, આ તો અમારી કલા છે રબારીયાની, અને આ ભરત અમારો રબારી ભરત કહેવાય. આ ભરત બીજી બેનો ન કરી શકે, અમારા રબારી સમાજ છવાય. તો અમે પણ આ ડિઝાઇન કરીએ છીએ ને, અમે આ કુદરતની બધી વાતાવરણથી કરીએ. કે શું કે અમે આ ઝાડ છે ને, ઝાડનો પણ કલર લઈએ અને ઝાડની પણ ડિઝાઇન લઈએ. ઝાડની ડિઝાઇન દોરી અને એના ઉપર પછી ઝાડનો કલર લઈએ. કે આ ઝાડની બાજુમાં બીજો ઝાડ છે ને, એનો કલર આ ડિઝાઇન ઉપર અમારે લગાડવાનો છે. પેલો જોઈએ કે આ કલર સારો લાગશે કે વળી અલ્ટો બીજો લાગે તો વળી ફૂલનો કલર લઈએ. However, a loss of markets, declining skills and difficulties in catering to new markets means that a number of artisans, craftspeople and weavers across India has been rapidly decreasing. In the last 30 years, this number has gone down by 30%. ये कच्छ एरिया को ट्रेडिशनल क्राफ्ट का हब कहा जाता है। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती है, हर एक कम्युनिटी का अलग से उसका पहचान रहता है। ये जो क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे पहुँच रही है, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है, उनको ये उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट नहीं है उसका एक वजह है क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं होती है। When the USHA Silai School program was opening up new schools in Kutch in 2013, the team came up with a new idea to preserve the dying arts and crafts of India. The Silai School program has also been extended to many artisans who were doing a lot of traditional work in terms of embroidery, mirror work and other things, but they didn't know how to stitch and sew. And probably that was the reason they were not able to add value to their existing creations. This sewing and stitching knowledge has enabled them to make products which could be pouches, bags, even garments like lehengas, tops, and this has enabled them to earn a higher income using both their traditional motifs in terms of embroidery as well as the finished products. पूरे गुजरात में हमारा काम चल रहा है और हमारी 900 से ऊपर स्कूल्स हैं, उसमें क्लासिकल स्कूल्स हैं, 265 स्कूल हैं क्लासिकल की, बाकी की सैटेलाइट स्कूल हैं। और इस सभी स्कूल को हम लोग इंश्योर करते हैं कि इनको इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट हो सके। तो हमारे ऐसे ही एक कच्छ में भी हमारी 120 स्कूल हैं और उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ઉષામાં એ કામમાં એટલો ફાયદો કે જો અમે આ ભરત કરીએ ને એમાં બહુ ટાઈમ લાગે, જલ્દી ન થાય, અને મશીનનો કામ છે ને જલ્દી થાય. તો એમાં થોડોક આપણને એમ કે 5 રૂપિયાનો વધારે જરાક પૈસા મળે, એટલે આપણે એમ થાય કે સાચે સાચી સિલાઈ કરીએ ને તો આપણી રોજગારી હાલે રહી. કામ ભરત પણ આપણે કરવાનો છે ને બાજુમાં આયે પણ કરવાનો છે. તો અમે ભરતે કરીએ પણ સિલાઈએ ભેગી કરીએ.
તો સિલાઈમાં એમ કે જલ્દી થઈ જાય, આમાં તો ટાઈમ લાગે ભરતમાં તો. USHA collaborated with Kala Raksha, a trust dedicated to the preservation of traditional arts. Kala Raksha provides a platform to market the products made by the women of the Silai School program. कला रक्षा का एम यही था कि क्यों ना हम इसी उनके ही काम को मार्केट में ले जाके कुछ नए कंटेम्पररी प्रोडक्ट बना के उसको बेच के वो अपने इनकम जनरेट करें. हमारे पास मतलब कला रक्षा जो एक रिसोर्स सेंटर है जहां हमने पुराने पीसीज हमने प्रिजर्व करके रखे हैं स्पेशली फॉर आवर न्यू जनरेशन आर्टिसंस की जो उनके पास जो कला है उसको आगे मार्केट में ले जाने के लिए उसके पहले का काम कैसा है, उसको कैसे कंटेम्परराइज हमें करना चाहिए और मतलब जो मोटिव्स है उसके कलर्स पहले कैसे यूज़ किए, जैसे 100 से 200 साल पुरानी चीज़ें हमने प्रिजर्व करके रखी हैं, जैसे उसको वो फिर हमें उसको रिवाइव करने के लिए ये सब हमने रखे हैं. USHA Silai School program and Kala Raksha started this journey in 2013. जब स्कूल जाती थी तब थोड़ा बहुत सिखाते थे, लेकिन स्कूल बंद किया. फिर मम्मी ने बोला अगर तुम्हें और कुछ करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है और तुम करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ ये काम सीख सकती हो. और मुझे भी इंटरेस्ट था, मम्मी को देख के लगता था कि नहीं मुझे भी सीखना चाहिए. सिलाई भी और भरत काम भी दोनों मुझे भी इंटरेस्ट था कि सीखना है, और मैंने मम्मी से ही सीखा है ये सब. और अभी मैं मम्मी के साथ मिलके थोड़ा बहुत कमाई लेती हूँ, दिन के 300-400 यानी कि 8-9 हज़ार का कमाई लेती हूँ. क्योंकि पहले हम लोग भरत काम करते थे, वो हस्तकला, लेकिन उसमें इतना भी इनकम नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता. लेकिन अब जब से उषा से हमने सिलाई सीखा और दोनों को मिला के हम जो काम करते हैं उसमें डबल इनकम होता है. But continuing the journey into the future involves passing these skills on to future generations. बहुत सी लड़की ऐसी है जिनको इसमें इंटरेस्ट है, तो हम जिनको इंटरेस्ट है उनको लेके तो अपना काम आगे बढ़ा ही सकते हैं. The USHA Silai School program is skilling artists and craftspeople in traditional stitching and swing techniques so as to keep India's rich and diverse crafts heritage from dying. It is also restoring the dying hopes and dreams of marginalized women. Kusum Devi of Hasanpur, Bihar was abandoned by her family. When every single door seemed to have shut on her, it was the Bhojpur Mahila Kala Kendra that found her and liberated her from the sheer misery. The Bhojpur Mahila Kala Kendra or BMKK, with the help of the USHA Silai School, gave Kusum Devi a purpose. She now has her own Silai School. ढुकने से पहले समस्या बहुत बुरा था, उसी में इतना गरीबी था कि मतलब आगे में नहीं बढ़ पाए. मेरा ससुर है तो भी रोक डाल रहे हैं, मेरा हस्बैंड है तो भी रोक डाल रहे हैं, लेकिन हम किसी के बात नहीं माने. दोनों आदमी के बात लाते मारकर हम जाके संस्था में जुड़ गए. हमको पता नहीं था कि सब कहाँ हो रहा है. जब हम रामगढ़िया में गए ना तो वहीं पर भोजपुर महिला केंद्र से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी में हम जुड़ गए. तो बहुत सारा काम हम सीखे वहाँ से जाकर, और वहाँ से जब सीखे तो 2015 से उषा मशीन का सिलाई सेंटर का अपना काम कर रहे हैं. घर पर भी लड़के लोग के सिखा रहे हैं, मशीन भी मिल रहा है, तो लड़कियों लोग के बहुत सिखाए हुए हैं. जब लड़की लोग सीख गए तो फिर अपना घर पर अपना दिमाग से काम निकाले हुए सर सुजनी का काम निकाले हुए हैं. आप बहुत सारा महिला लोग हम सिखा रहे हैं, आप महिला लोग सीख रही है. Kusum Devi is a master in Sujani. Sujani is an ancient form of embroidery from Bihar. Sujani breaks up into Su, which means facilitating, and Jani, meaning birth. Quilts for newborn babies,
were made by stitching together colorful patches of old clothes, and then Sujani embroidery was done with colorful threads to create motifs and designs. कि सुजनी एक ऐसा कला है कि हमारा दादी नानी ये सब बनाती थी और ये पुराना कला है। धीरे धीरे ये जो कला है लुप्त होते जा रहा था, तो लगा कि जो गांव की महिलाएं हैं जो अपना ये सुजनी वर्क बनाती थीं, लेकिन अपने बेटी को झांपी में देने के लिए बनाती थी, तो हमें लगा कि ये झांपी में ही क्यों रहे, ये महिला को हुनर दे करके और पूरे देश विदेश में इसकी बिक्री कराया जाए। इस उद्देश्य से हमने सुजनी कला का विशेष हम लोग बढ़ावा दे करके ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं, ताकि ये कला लुप्त नहीं हो। Kusum Devi has turned her life around with the help of BMKK and the USHA Silai School program. She was already an expert in Sujani, and the USHA Silai School program trained her in sewing and stitching as well. Now Kusum Devi is skilling other women too. उषा से हम जुड़ गए हैं, सिखा रहे हैं, तो उषा कहीं भेजते हैं सिखाने के लिए कि जाइए सिखाइए, वहाँ से अपना कमा कर आइए, तो उषा तो अच्छा है। आज उसी से हम बढ़ रहे हैं। बहुत सारा मेरा गरीबी दूर हो गया। छोटा मेरा ज़मीन है ना, मैंने छोटा घर है, तो बड़ा लिए हैं वहाँ उधर दलाल, वहीं पर सब लड़कियों लोग के हम सिखाती हैं और महिला लोग के। The USHA Silai School program hasn't just given women new skills. It has also provided Kusum Devi and her students a platform to sell their products. हम लोग का ऑर्डर आता है तो ऑर्डर से माल भेज देते हैं। एक गो सुजनी हम लोग निकाल देते हैं, छोटा वाला 4000 का, 5000 का, बड़ा वाला 5000 के बेचेंगे, तो सर फायदा है ना। ये सब बाहर में माल जाता है सर, हर जगह हम सफ़र किए हैं। गोवा में गए हैं, बम्बई गए हैं, पंजाब में गए हैं, हरियाणा गए हैं, दिल्ली में, हर जगह सर हम सफ़र किए हैं। Women like Kusum Devi and Hasuben are Silai heroes in more ways than one. Not only are they a crucial link in keeping alive the dying art forms like Sujani and Rabari, they are also helping empower other women in their villages with self-confidence and resilience. Manipur is the jewel of India. The state has the highest number of handicraft units as well as the highest number of craft persons, skilled and semi-skilled artisans in the entire northeastern region. Manipur also ranks among the top 5 in terms of the number of looms in the country. And not to forget, Emma Bazaar, one of India's largest markets run by women. This market primarily sells handloom and handicraft products such as earthen pots, knives, shawls and puppets, as well as all kinds of dried fish and vegetables. But with time and modernization, the jewel of India is losing that sheen. The USHA Silai School program, with the help of local NGO PDS or People's Development Society, has taken charge to turn things around in Manipur. We are working in the field of empowering the women sectors in the sense of income generation activity, skill development, capacity building and financial literacy. In our Manipur, so many traditional cloth, traditional dress, traditional stitching is there. After USHA coming, the production and their work is also increased.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯊꯝꯕꯥꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯔ ꯃꯥꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯦꯁ ꯃꯥꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯐꯖꯔꯤꯒꯩ ꯃꯤꯅ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯈꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒ ꯈꯔ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯃꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯟꯁꯜ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯧ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯨꯡꯕꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ 15,000 ꯇꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯡꯈꯜ ꯑꯃ ꯇꯨꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5 ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯖꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅꯔꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯥꯡꯈꯜꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯨꯠ 6 ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯩ ꯐꯨꯠ 5.5 ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯩ 4 ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ 3 ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯇꯨꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗ ꯐꯨꯠ 5.5 ꯀꯣ ꯑꯗꯩ 3 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦꯀꯣ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 7 ꯏꯟꯆꯤ 3-4 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 7 ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯠꯅꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ खरा चावरगा मरांग कायरगा हेना कांखन से कनबा यादे मी जो पांबा हेंबनिना कस्टमरना मयामदई खरा खरा इंची अमनी दि दुम थोरगा कोई दुम अयाम कनो तौरे अदु लेसु अदुम अनौबा मा लाकपदा अखोई लेसे लेस कुंबदनेबा खरा खेनाबा आदि कांखन जी की डिजाइन खेनाबा थमिसे अदु लेस कुंबदा होय अयामसु कनो तौवे डिजाइन तौवे हादि मागी लेदना अपामदुगी मतुंग इना सो अदु फैशन थोपा मतमदसु लेस की मखा पोलेबा फजनबसे यामना अदुमाइना अखोई हुजी पोदे दमाई सिजिनादि. The bed covers and mosquito nets are specially quilted for newly married couples and users who have a preference for this traditional style. And so, quite naturally, the demand for her products rises during October to November, which is the peak period for weddings in Manipur. To meet that rising demand, she is now building a bigger space. Amumpa pidak se koi erina lole. Erina mitsan amani de leko. Aduna adu chumana hujikti aigi jaga se pikpanina mai gi yum do ina yamba wak tawreba. Adu tawbaduna mumpa pidak ki asang basi junga sai kangthondo mai asang badu nap to ki matung ina akoina laure matung da design di akoina seme adi खराब मतलब जी की चुसन्नबा अयिंगबा पामबसु यावे फजबा इंगना फजबा पामबसु यावे अदुगी मतुंग इना अखोइना सेट माना सी पिबियु माना सी तौबियु हाबदो सी कापियु येलो कापियु हादो मा अदु मतुंग इना दum सेमे. The USHA Silai School program has shown her how to get off to a simple start and sustain her business such that she can scale up over the years. Now, she is able to manage her household chores and also her micro unit of business at the same time. Hogi luhong bagi order se akoi asuk mati hadi nungsibi bani khangde amani khangde lakba se akoi 30,000 ko set amada pire pibasina ngasagi students su tha amada ko akoi gi 30,000 pire bani ngasagi akoi mayam se akoi suba makta oraga su nangi asu habado aina pothok cha ga su mana sujaba matamda moisu tha amada lising akoi gi manga suba sawe mai design gi matung ina khara hena chawa suraga na ko ado tranga si di compulsory sum phange adugi matung da khoi ai isagi oinadi ai tham da lising homfu adum homfu gi mathak ta dum tale ha ba yai habadi order ahum dang lak pada ne 1 lakh ti dum khoi dum kano tawe ba thamada
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 60 ꯋꯥꯂꯛꯁꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ 15,000ꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ 60,000 70ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯜꯂꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ. In her community, Sunita is recognized as the driving force behind all the other women and girls involved in different swing or craft-based works. The girls are learning important lessons in self-confidence that will help them lead self-reliant lives, so that together they can continue to save Manipur's identity as the jewel of India.